4 পর্বের ভিডিও 1 থেকে 4 এপ্রিল রোজ রাত 9টায় একটি করে পর্ব প্রকাশিত হবে। আশা করি সবার ভালো লাগবে। অনুরোধ, আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন। সাবস্ক্রাইব বাটন ক্লিক করার পর পাশের বেল আইকন প্রেস করলে অল অপশন পাবেন, সেটায় ক্লিক করুন। I'm Sonam Wangchuk. Today, on the 6th of March, I will be sitting on fast unto death. I'm starting my 15th day of climate fast. एक वीर जवान मेरे साथ पहले दिन से ही, यानी कि आज उनका भी 15वां दिन खत्म हो रहा है और मैं आपसे उनका परिचय आज कराना चाहता था। वह हैं लद्दाख के जो सैनिक बल है, लद्दाख स्काउट्स, उसके एक वीर जवान रिटायर्ड सूबेदार स्तनबा, जो मेरे साथ यहाँ बिस्तर पर हैं। मैं आज आपका उनसे परिचय कराना चाहता हूँ। नमस्ते जी। मैं तकरीबन 30 साल बराती सेना में रह के पूरा बराती देश का रक्षा करने के बाद अभी मैं हाल ही में रिटायर हुआ हूँ। फिर हम लद्दाख के साथ इस तरीके से बर्ताव हो रहा करके फिर हमें बहुत अफसोस हुआ है और बहुत दुख हुआ है। तो इसीलिए फिर मैं सोनाम वांगचुक सर के साथ अनशन में रहने का तैयारी किया और ये मैंने ठान लिया कि जब तक कि हमें हमारा मांगे पूरा नहीं होगा, चाहे हमारा जान भी चला जाए, तो हम यहाँ पे हमारा अनशन रहने के लिए बिल्कुल तैयार है। सूबेदार रिटायर्ड स्तनबा 1999 में कारगिल युद्ध में बहुत ही सक्रिय लड़ाकू रहे हैं। अब मैं आपको लद्दाख स्काउट्स के बारे में बताऊं। आप लोगों ने शायद ज्यादा नहीं सुना हो। लद्दाख स्काउट्स एक इंडियन आर्मी का बहुत ही एलीट, बहुत ही काबिल सैनिक दस्ता है, जो शायद 5-7 हजार का ही है, मगर इन पहाड़ों में ये सबसे असरदार सैनिक है, क्योंकि यहाँ इसके सैनिक जो हैं वो यहीं पे पैदा और पले बड़े होते हैं। तो ये बिल्कुल आइबेक्स की तरह पहाड़ों पे दौड़ते हैं, जहाँ औरों के लिए चलना तक मुश्किल हो जाता है, अपना बंदूक उठाना मुश्किल हो जाता है, वो दौड़ते हैं औरों का भी सामान ढो के। तो मैं आपको बताऊं, उनके जो पुरस्कारों का बहुत ही डेकोरेटेड, बहुत ही पुरस्कारों से सुसज्जित सैनिक दस्ता है ये। इस तरह लद्दाख की जनता जो हर युद्ध में काम आई है और फिर इतने सारे भूतपूर्व सैनिकों का मन दुखाना, ये भारत की सुरक्षा के लिए भी अच्छा ना होगा। लद्दाख के संरक्षण में ही भारत की सुरक्षा है। 16th day of my climate fast. Today let me take you through some similar fasts in the past and see the sensitivity of governments towards such genuine people's movements. In 2011, Anna Hazare ji, during the India Against Corruption movement, sat on a fast unto death for the anti-corruption bill, the Lokpal bill, to be passed in the parliament. And by the 13th day of his fast, the parliament unanimously passed the Lokpal bill and he happily ended his fast. That was the sensitivity of the government then. In fact, it was from the movement for India against corruption that the current government of BJP rose to power in 2014. My own father sat on a fast unto death for the rights of the tribal indigenous people of Ladakh. Then Prime Minister Mrs. Gandhi flew from Delhi to Ladakh and broke his fast with a glass of juice. Later, they fulfilled the demands. This again shows the sensitivity of governments to people's movements. Then there is also the story of Pottishri Ramalu, who in 1952 sat on a fast unto death for the creation of Andhra Pradesh out of Madras Presidency. Unfortunately, he died after 58 days of his fast, and the insensitivity of the government of Pandit Nehru was that they didn't fulfill it while he was alive, but 3 days after his death, when huge riots broke out, he accepted the demands and
gave the decision to create Andhra Pradesh. 17th day of total climate fast. I wish you all happy World Water Day. Today, 22nd March, we celebrate this precious liquid that is more precious than gold. We can live without gold, but we cannot live without water. It is that precious, just that it is so abundant that we don't understand its value. And thousands of people in the day exactly for safeguarding the water towers of Asia, the glaciers of Hindu Kush Himalayas, which, by the way, support the lives of roughly 2 billion people directly or indirectly, which is 1/4 of the population of the planet. And entire North India depends on it. So it's not just Ladakh's problem, it's everybody's problem. We here in Ladakh are primary witness to the disappearing glaciers in the wake of climate change. In my own life, I've seen glaciers vanish. Glaciers that used to be by the roadside, or rather we used to drive over, are now hundreds of meters away and above. Glaciers like Drangdrung, which used to be a towering height that we would strain our necks to see, are now a shadow of themselves. Flash floods and droughts alternatingly. The impact has been so bad that some of us in Ladakh are forced to invent artificial glaciers like Mr. Norfell, or at our school and university we have been inventing giant vertical cones of ice called ice stupas that hold millions of liters of water in winter as we refreeze the melting glaciers, and due to its shape they last till summer when water is most needed. And now we are embarking on modern automation, and for the last 2 years our team has been working on automating the whole process so that it is painless for the villagers to make, and the operations are unmanned when it is -20 to -40 degrees. Another advance we are making is we're going into making huge ice dams covering entire valleys so that these help recharge the groundwater while themselves being a reservoir of water that does not hinder the flow of floods in the autumn like dams of concrete or other materials do. We are happy about these developments, but we are not at all proud of them because these little interventions cannot solve our water problems. Melting glaciers. The real solution lies in your hands. So the demands or the objectives of my fast are actually twofold. One, to change the lifestyles of people in the big cities. Secondly, from the government to change their policies to safeguard these fragile ecosystems with their glaciers, flora, fauna, and unique indigenous tribal cultures under the Indian Constitution, the 6th schedule. We hope you will join your voice with ours for having a green, safe and secure Himalayas. कारगिल से जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है उनके दिग्गज नेता यहाँ मिलने आए। उन्होंने पिछले 20 मार्च को कारगिल बंद भी किया था इसी संरक्षण और लोकतंत्र के समर्थन में, और अब उन्होंने ये घोषणा की कि रविवार 24 मार्च से 27 मार्च तक कारगिल में सब अनशन पे रहेंगे। दुखद एक रिपोर्ट या खबर मिली है कि आपके शहरों में रविवार को सभा करने के लिए प्रशासन अनुमति नहीं दे रही है। ये सुनकर मुझे बहुत ही दुख और हैरानी हुई
कि ऐसे छोटे सभाएं जो कि राजनीतिक भी नहीं हैं, उनको अनुमति क्यों नहीं देती है सरकार या प्रशासन। 18th day of climate fast on water and salt. In the name of development, we plunder the mountains and destroy our own habitat, the glaciers, the flora, fauna that exists here. While we talk of 8%, 10% growth as the best thing to happen to a nation, we must see that we are not the only habitants of this beautiful planet. We have other siblings, those in the wild. And let's look at what's happening to them while we talk of 8 and 10% growth. We are not the only ones on this planet. Development cannot be so anthropocentric. According to WWF, a whopping 69% of wildlife has been wiped off from the face of the planet in the last 50 years alone. 83% of the aquatic life has been wiped off, and forests on which we depend so much, 30% of the forests are wiped off. And we talk of growth, 8%, 10%. Their very existence is finished, and it doesn't just harm them. We depend on them on this planet. Without our siblings, this will become like a Mars or moon, and it will be our end very soon. If we humans want to survive on this planet, we'll have to coexist in harmony with nature. And that's why we appeal to you to stand up while it's still time to save Ladakh, to save the glaciers, to save the Himalayas, in fact to save the planet. आज यहाँ पर फिर दिन में लगभग 1,500 लोग आए, जिनमें भिक्षुगण, विद्यार्थी, महिला, पुरुष, बड़े छोटे बहुत लोग आए। तो जब देश में सच्चाई को कद्र नहीं किया जाता है तो क्या होता है उस देश के साथ, आज मैं आपको ये उदाहरण सहित बताना चाहूंगा। दुनिया के देशों में, लगभग 180 देशों में, कौन कितना ईमानदार है, सच्चाई पे चलता है और कौन कितना पानी में है, इसका मापदंड एक संस्था जिसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है, वो हर साल करती है। तो यूं सोचिए, दुनिया के 180 देशों की कक्षा में अपने भारत का क्या पोजीशन है। हमारा महान देश प्रथम पोजीशन पे नहीं है, फर्स्ट पोजीशन पे, दूसरे पे भी नहीं है, तीसरे पे भी नहीं है, चौथे, पांचवे, छठे पे भी नहीं है, 93वें पोजीशन पे हमारा देश है, फिसड्डी 93 पोजीशन पे। और हम सच्चाई की कसमें खाते रह जाते हैं, व्यवहार में ये हालत है। अब हम भारत में जल्द ही जल्द विकसित देश बनना चाहते हैं, महान देश बनना चाहते हैं, धनी देश बनना चाहते हैं। तो अब जरा ये देखिए, ये है दुनिया के सबसे धनी देश, जहां पर कैपिटा जीडीपी सबसे ऊंची है। तो इनको जरा देखिए, ये जो सबसे धनी देश हैं, इनमें से आधे तो वही हैं जो सच्चाई के रास्ते पे भी सबसे ऊपर थे। यानी कि साबित क्या होता है कि वही देश जो सच्चाई पर चलते हैं, वही धनी और विकसित देश भी बनते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर भारत में वचन का कोई अर्थ ना हो, सच्चाई का कोई माने ना हो, वादे तोड़ दिए जाएं, तो हम कभी महान देश नहीं बनेंगे, विकसित देश नहीं बनेंगे। विश्व गुरु तो छोड़ ही दीजिए। Today it's my 19th day of climate fast, beginning now. I'll share some ideas with you. You know, we have done so much damage to nature in the name of development and growth. Our current concept of growth and development is so anthropocentric, so human obsessed, that we have decimated everything else, all living beings, all non-living beings that share this planet with Earth. So let me share a crazy idea. How about having nature representatives in our parliaments that can advocate for nature? The idea may shock you, but let me put it this way.
Do you know that before 1920s, idea of giving suffrage or voting rights to women was shocking to people around the world. It was only in the early 1900s and finally in 1920 when US passed the law for women's voting rights that this became a normal, natural thing today. We can't even think of women not being able to vote today. Similarly, having colored people, blacks for example, to vote or run for office was just unthinkable. And after a struggle of some 100 years, finally it was in 1965 that US passed the law of all colors could vote. Today, it's just unthinkable that a black person, because of his color, would not be allowed to vote. So what's next? Can we take the idea of inclusion to the next level and give nature a voice, to have nature representatives? And tomorrow, it might be unthinkable for us to think that nature was never represented in our parliaments of the past. Today, it's all human-centric. For example, Delhi, with an area of 1,500 square kilometers, has 7 MPs, and Ladakh, with 60,000 square kilometers, has only 1 MP, because Delhi has 20 to 30 million people and Ladakh has only 300,000 people. But Ladakh is not just these 300,000 people, it's a lot of vast wild nature, glaciers that we depend for our lives. All this is not represented in our parliaments for policy making. So how about giving such representation based on the area and sensitivity of nature and not just human population alone? And why only Ladakh? All over the world, shouldn't the elephants and the birds and the bees and the grasslands and glaciers and trees have a voice in our parliaments for making policies that make sense for them also? Of course, elephants and trees cannot speak nor choose representatives. We can help them with nature advocates. Mechanisms could be worked out on electing them, but the idea is giving them voice, and true inclusion and actually true democracy will be when they also get included. आज रविवार को देश भर में लगभग 40-50 शहरों में सभाएं हुई, अनशन हुए और लद्दाख के समर्थन में लोग जुटे।